this session, we are going to discuss about multimodal artificial intelligence. Just few days back, I have discussed about artificial intelligence and specifically machine learning. Now, in this session, I'll focus on a specific kind of technology that is multimodal artificial intelligence. From this image, you can see and you can analyze that what it's going to be. Okay, one more image I would like to show you. This is unimodal AI, and here you can see that inputs are just one kind input or one type of input. This is the AI model. After processing through AI model, you are going to have some limited output. Now, in the case of multimodal AI model, you may have different types of input. पिक्चर्स, वीडियोस, टैक्स, कुछ भी हो सकता है. तो ये जो इनपुट मिलेगा, if they are processed through this type of multimodal AI model, then you are going to have a wider range of results. So इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे, यूनिमॉडल में कुछ एक टाइप का आप इनपुट दे रहे हो और इसलिए आपको वो AI मॉडल से प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट मिल रहा है वो लिमिटेड आउटपुट है, जहां आपका कुछ कंस्ट्रेंट रहेगा, राइट? आप एक वाइड रेंज ऑफ आउटपुट आपको नहीं मिलेगा. बट मल्टी मॉडल एआई और मल्टी मॉडल एआई मॉडल में आपका इनपुट्स डिफरेंट टाइप का हो सकता है. डिफरेंट टाइप्स, आई मीन टू से दैट इट मे बी इमेज और इट मे बी वीडियो, इट मे बी टेक्स्ट. And after processing through this AI model, you would like to you are going to have wider range of results. And from those results, you can analyze and better optimize your output. So this is the brief introduction. Let's come to the textual part then. So what is multimodal AI? Multimodal AI systems are those systems that allow users to interact with AI. AI stands for artificial intelligence through various means, such as images, sounds, videos, and text. And this approach is important because it aligns more closely with how humans understand and interpret information from diverse sources. What is AI exactly? AI is artificial intelligence, and AI-based systems tries to mimic human beings. मतलब हम human beings जैसे react करते हैं, जैसे response करते हैं, उसी को mimic करते हैं आपका AI systems. अगर आपको ऐसा AI system मिल गया जो क्या कर सकते हैं, वेरियस मीन्स के थ्रू मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं हम उस एआई सिस्टम के साथ. मतलब इंटरेक्ट मतलब उस एआई सिस्टम के साथ आप इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि आप इनपुट दे रहे हो. तो वो इनपुट इमेजेस भी हो सकता है, साउंड्स भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है. तो इससे क्या होगा, ह्यूमंस का जो अंडरस्टैंडिंग है और इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन करने का जो एक वे है वो और डाइवर्स हो जाएगा. Right. So that is the multimodal AI system. I'm repeating again, multimodal AI system allows users to interact with AI through various means like images, sounds, videos, and text. And it is very important that it aligns more closely with how humans understand and interpret information from diverse sources. Okay. Now, कुछ key points हैं regarding multimodal AI. যিবিলাক আপোনালোকে অলপ মনত ৰাখিব লাগিব as per AI आपका जो एपीएससी इस बार मेंस में आपने देखा होगा बहुत क्वेश्चंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड हो रही है. इवन इन द एसए पेपर आल्सो यू कैन फाइंड क्वेश्चंस ऑन एआई सच जीपीटी, राइट? सो की पॉइंट्स रिगार्डिंग मल्टीमॉडल एआई, और इसके ऊपर आपका एपीएससी इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी है. नाउ लीडिंग एआई कंपनीज लाइक ओपन एआई and Google are actively pursuing multimodal AI systems. OpenAI, known for GPT-3 and GPT-4, has enabled its model to understand and analyze images, and its mobile apps are being equipped with speech synthesis for more interactive conversation with chatbots. So OpenAI, मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए रिलीज किया था कुछ समय हो गया. that video is purely on ChatGPT, right? और वहां मैंने आप लोगों को बताया था कि जो GPT-3 and GPT-4 technologies है, that is behind that means company behind that is the OpenAI.
और ओपन एआई ने क्या किया है, अपने जो मॉडल्स है उनका, उसमें इमेजेस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या तो एनालाइज कर सकते हैं, या तो स्पीच सिंथेसिस का मतलब यह है आप স্पीच बोल रहे हो, जैसे মই অসমীয়াত কথা কৈ আছো, মই হিন্দীত কৈ আছো, বা এনেকে মই ইংলিছত কৈ আছো, so I'm speaking in my natural language, and that natural language processing is enabled in each mobile head, so that whatever the language or what we speak, that will be understood by that system, and that will be converted into machine readable or machine understandable language, so that it can easily give the output according to the input, right? According to the input that it got through speech or natural languages processing, right? So ये जो ओपन एआई है, उन्होंने जीपीटी 4 में ऑलरेडी इमेज को अंडरस्टैंड एनालाइज करना, और साथ में जो मोबाइल है एप्स हैं उसमें स्पीच सिंथेसिस का कैपेबिलिटी रख दिया है, ताकि आप जब चैट बोट्स के साथ कॉन्वर्सेशन करोगे, चैट बोट्स मतलब क्या होता है, असिस्टेंट सिस्टम, जैसे यहाँ कोई भी आप आजकल वेबसाइट खोलते हो तो यहाँ पे आ जाते हैं कि वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, व्हाट इज योर व्हाई यू आर हियर, और व्हाट इज योर मींस क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, আৰু আপোনালোকে তাত আপোনালোকৰ নিজৰ কুৱেশ্যনটো লিখে। চ' সেইটো কি হয়, সেইটো চেট বট হয়, ৰাইট? সেইটোত হিউমেন নাই, সেইটো এটা মেচিন এনেবল অৰ এআই এনেবল চেটিং হয়, কনভাৰ্চেশ্যন কৰিছে আপুনি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৱেবছাইটটোৰ লগত। So that is chatbot, and that is being equipped with this type of analysis system. So that is also a part of multimodal AI. तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग दे सकते हो कि ओपन एआई जो जीपीटी 3 एंड जीपीटी 4 है, उसमें ऑलरेडी वो एनेबल कर सकता है, कर दिया है ऑलरेडी मल्टी मॉडल एआई। नाउ वो कैसे काम करते हैं, वर्किंग ऑफ multimodal artificial intelligence. It involves combining different modalities such as text and images or text and audio during the training. This enables AI systems to understand and generate content across various modalities. Remember, in the last class of machine learning, I told you about two phases. Machines are undergoing through machine learning, and those two phases are training, where we train the machines, and testing, where we test the machine, right? So ट्रेनिंग के दौरान आपका क्या हो रहा है कि टैक्स इमेजेस, टैक्स ऑडियो के थ्रू आप ट्रेनिंग करा रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, वो एआई सिस्टम के पास कैपेबिलिटी बन जाता है कि वो ऑलरेडी जो कंटेंट है वो किसी भी इस टाइप का इनपुट ले सकते हैं और अपना आउटपुट दे सकते हैं प्रोसेस करने के बाद। Now, ये जो सिस्टम है, इसमें 3 मेन कंपोनेंट है। मल्टीमॉडल एआई सिस्टम्स आर टाइपिकली built from a series of 3 components. And what are those 3 components? Input model, fusion model, and output model. Sorry, input module, हाँ, model नहीं बोलना, module, input module, fusion module and output module. और ये 3 modules जो है, ये 3 modules मिलके एक मल्टीमॉडल एआई सिस्टम बनते हैं। तो व्हाट इज इनपुट मॉड्यूल? इनपुट मॉड्यूल इज द सीरीज ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स responsible for ingesting and processing or encoding different types of data such as speech and vision. And each type of data is generally handled by its own separate neural network. So expect numerous unimodal neural networks in any multimodal AI input model. So in short, I have to say that input module is working as a kind of what? That module which actually accepts the input, and that input may be either text, image, audio, video, like that. And for each such a type of input, different input, it has a different unimodal neural network. Unimodal neural network means one particular model dealing with text, one particular model dealing with audio, like video, one another model for video, and ultimately it all combines them, right? So that is for fusion model. So ये इनपुट मॉड्यूल का समझ में आ गया आप लोगों को कि প্ৰতিটোৰ কাৰণে এটা বেলেগ বেলেগ মডুল থাকে, ই টেক্সটৰ কাৰণে হ'ল বা ইমেজৰ কাৰণে হ'ল और वीडियो के लिए हो गया, ठीक है, ऑडियो के लिए हो गया, वो सारे मॉड्यूल्स यूनिमॉडल न्यूरल नेटवर्क के जरिए ये इनपुट को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। न्यूरल नेटवर्क क्या है, मैं पिछला जो क्लास था उसमें भी आप लोगों को बताया था, काइंडली गो थ्रू दैट क्लास, ओके। देन फ्यूजन मॉड्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग, aligning and processing the relevant data from each modality, speech, text, vision, etc., into a cohesive data set that
utilizes the strands of each such data type. Fusion is performed using a variety of mathematical and data processing techniques such as transformer model and graph convolution networks. So फ्यूजन मॉड्यूल में क्या हुआ, जो इनपुट मॉड्यूल में आपका अलग अलग टाइप का इनपुट मिला था ना, उसको क्या करते हैं, ये अलाइन कंबाइन करते हैं, अलाइन करते हैं और प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ताकि एक कोहेसिव डाटा सेट बना पाए और वो कोहेसिव डाटा को यूटिलाइज कर पाए, ताकि इस पार्टिकुलर जो जितने भी डिफरेंट टाइप का डाटा टाइप है उसको मैथमेटिकल और डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक के जरिए प्रोसेस करके क्या कर सकते हैं, एक वो वहां से एक आउटपुट निकाल सकते हैं, और वो आउटपुट जो मतलब उसको प्रोसेस करने का काम होता है आउटपुट मॉडल को. Got it? So QSUM is performed using a variety of mathematical and data processing technique. वो different हो सकता है, एक ही मैथमेटिकल मॉडल काम करेगा या तो डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक काम करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग पर्पस के लिए आपको अलग अलग मैथमेटिकल या तो डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक आपको यूज करना पड़ सकता है, उसी टाइप से आपको मॉडल को बनाना पड़ेगा. बस ये समझ लो आप लोग एज ए सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, आप ये समझ लो कि इनपुट मॉडल के बाद वो डिफरेंट टाइप्स का जो इनपुट है उसको फ्यूजन या तो कंबाइन करने का काम है फ्यूजन मॉडल का, और आउटपुट मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द आउटपुट फ्रॉम द मल्टीमॉडल एआई, इंक्लूडिंग मेकिंग प्रेडिक्शंस और डिसीजंस और रिकमेंडिंग अदर एक्शनेबल आउटपुट द सिस्टम और ए ह्यूमन ऑपरेटर कैन यूटिलाइज. ठीक है, तो ये आउटपुट क्रिएट करेगा आउटपुट मॉडल. नाउ ये आपने देख लिया इनपुट मॉड्यूल, इनपुट लिया डिफरेंट टाइप्स का इनपुट, फ्यूजन किया फ्यूजन मॉड्यूल ने, और आउटपुट वो प्रेडिक्ट करके बता देगा कि जिस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, सपोज वेदर प्रेडिक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, शेयर मार्केट प्रेडिक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, या तो कुछ भी ऐसा सपोज अर्लियर वार्निंग सिस्टम के लिए हम यूज कर रहे हैं, उस पर्पस के लिए जो आउटपुट चाहिए था ये आउटपुट दे देंगे आपको आउटपुट मॉड्यूल. Now, example क्या हो सकता है? Examples like OpenAI's DAL-E model connects text and images to generate visual content based on text prompt, while GPT's voice processing capabilities are rooted in Whisper, its speech-to-text translation model. Now, let's essence of multimodal AI. Multimodal AI has practical applications such as automatic image caption generation, detecting hate speech in memes, predicting dialogue in videos, and even potential uses in fields like medicine, autonomous driving, and robotics. So multimodal AI का बहुत सारे applications है. Automatic image caption मतलब कोई भी इमेज आपने अपलोड किया है, सब सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया या तो इंस्टा हो गया, उसमें वो पर्टिकुलर पर्सन, सपोज उस इमेज जो इमेज है, दैट इमेज कंसिस्ट ऑफ 3-4 persons in that image, then face will be automatically recognized, and if that particular person is already in that social means media site, then he will be tagged in that photo. So that kind of image caption generation, and very important that detecting hate speech in memes. ऐसा कुछ मीम्स बनाते हैं आजकल जिसमें हेट स्पीच जो है वो स्प्रेड करते हैं, तो वो हेट स्पीच को आप पहले ही डिटेक्ट करके क्या कर सकते हो, उसको स्टॉप कर सकते हो, राइट. देन डायलॉग्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और जो ऑटोनोमस ड्राइविंग है वो सारी चीजों में भी हम क्या यूज कर सकते हैं, मल्टी मॉडल एआई. एंड इन मेडिसिन multimodal AI is useful for processing complex data sets from sources like CT scans. ठीक है, मेडिसिन में इसका यूज है, सीटी स्कैन्स में जो भी आपको इमेजेस है वो इमेज कॉम्प्लेक्स इमेज है, राइट, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स है, उसमें उसको प्रोसेस करके उसका कुछ प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं. दैट इज एन एप्लीकेशन इन मेडिसिन फील्ड. एंड देन इन स्पीच translation, AI models can perform text to speech, speech to text, speech to speech, and text to text translation for various languages. ठीक है, suppose our prime minister is speaking in Hindi, okay, and that language is not understood by some suppose personalities from France, or some personalities from say another country, United Kingdom, then that Hindi will be automatically converted into that specific language of that country, say in UK English or say France, so that those persons can also understood. So in that case also we can use AI models, means multimodal AI, and that will be speech to speech translation. Then speech to text, suppose मैं अभी हिंदी में कुछ बोल रहा हूँ, आसामीज में कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, हेतु तुम्हारा ट्रांसलेट हो जाबो
টেক্স হলে মই অসমীয়াত কিবা এটা কৈ আছো, and that will be converted into text. মই suppose কলো মই ভাত খালো, then that will be converted into English. Say I have just taken my dinner, I have just taken my lunch, like that. ठीक है. तो कुछ भी लैंग्वेज में आप बोलो, उसको क्या कर देंगे, वो ट्रांसलेट करके जो भी पार्टिकुलर लैंग्वेज है, सपोज हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, उसमें ट्रांसलेट करके दे सकते हैं. So these are some very important applications of multimodal AI, and now this is in trend. So there's a very high probability that some questions may be asked in the upcoming prelims and also in the APSC interview also, and some another exam like UPSC. So we should very much be aware with this type of recent technologies. So I hope that whatever I have discussed about multimodal AI and some technical terms related to this is now clear to you. And if you want to know more, then just comment your query. Obviously, I'm going to respond that. So with this, I'm ending this session. Thank you very much. Bye-bye.